Thanks to Foxstar. Thanks to Phantom, Vikas, Vikram, Vijay Singh, Deena, whole lot of people. Thanks to RK, who read the script in a flight and called me and said that, "ये film मैं कर रहा हूँ." The moment he landed, he called me before he got out of the flight. And Anushka, who's been on board before anybody, Manish Chaudhary, KK, Vivan, and the man who was cast at the last moment, Karan Johar. So before I proceed, let me first show you the second trailer of the film. With the second trailer, we kickstart the actual promotions of the film. Can we have the trailer, please? Please. एक बार और. Let me first invite on stage my two partners in crime who believed in this dream. It's an impossible dream to believe in. And can I have Vikram Motwani on stage, please? My producer. And Vikas Behel. And Vikas Behel, I think he's still on the way. And the one man who made it possible for us to realize this dream, Mr. Vijay Singh, please. And now I think it's the time to invite the cast of the film. So let me first introduce the heartthrob of the country, the heartthrob of Bandra, the sexiest man in Bandra, Karan Johar. And now I'll call the second most popular man in in the film, in Bandra, Johnny Balraj, Ranbir Kapoor. That's how he is introduced in the film as well. So that's how he fumbles into the film. And now the first person who actually came on board on the film, much before the film started, somebody who showed her faith much before I even spread out the script anywhere, Anushka Sharma, Rosie Norona. Is Satu okay? हमारे बाकी एक्टर्स अभी आ रहे हैं. Satdeep Mishra, KK Menon, Manish Chaudhary, they're all on the way. There's also another actor who plays Karan Johar's henchman and is also a writer of the film, Vasan Bala. He's standing right there. Can you please stand up? और आज आपको जो सवाल पूछने हैं, आपने मतलब इतनी कहानियां सुनी इस पिक्चर के बारे में, सारी दुनिया ने, और मैं पढ़ पढ़ के थक गया हूं कि क्या क्या हमारी फिल्मों के बारे में बात हो रही है. तो आज जो पूछना आप पूछ सकते हैं, सारे सवाल पूछ सकते हैं. और बिफोर दैट, विजय,
मधु का एक रूल है, वो कभी फिल्म में अपना नाम एज अ प्रोड्यूसर डालते नहीं है, लेकिन हमारे पीछे खड़े रहते हैं हमेशा. हेलो अनुराग जी. Karan, you want to say something about the film? No, they should. I should say that about Anurag. Firstly, I'd like to thank all the members of the media for coming in such large numbers. As you know, this has been our second and important theatrical unit that we've released just now as we speak online. The film actually has been open to conjecture from the time that actually it started, and even pre-release, the buzz and banter about it continues. All I have to say personally, I think it's been the most exhilarating experience of my life, being directed by Anurag Kashyap, from a man, from a relationship that began with hate, that has now culminated into intense love, and there is absolutely no pun in that thought. It's really been quite a journey for me in the film, and working under him has been like going to film school. I felt I had to unlearn everything I ever knew about cinema and actually learn something absolutely new. Working with the two of them, actually Anushka and I did very few days of work, but the few days were memorable. And Ranbir actually co-directed the film with Anurag, where I'm concerned, because Anurag would give me one instruction and Ranbir would give me three others. Most of my scenes were with him, so I felt I was being directed by him as well. And I have to say, Ranbir has the makings of a great filmmaker, which is a great fallback plan for him if all things do fail. I have to say a big word to Phantom, which I think has been putting out such tremendous content almost about 3 or 4 times a year. I think truly this film will kind of cement and seal that when it comes to new age path-breaking content, Phantom is definitely the one-stop shop. And I think supported so superbly and dynamically by Fox Star. Vijay, thank you very much for lending such tremendous support into this type of cinema. There is always so much that is said about cinema like this, where they say, you know, is this mainstream, is it commercial? But eventually we all have to know a good film is a good film and you should not categorize it. And Bombay Velvet is that film. It's a good film. And I think thank you. Where it comes to the funding, I think that's most critical for a film with a vision. And I think Fox Star pulled all stops to execute the film in its best possible way. So thank you. Thank you to the entire team at Fox, the marketing team, the production team, the distribution, all of them. And I think I've behaved like I have funded this film. I've spoken so much. So I'm going to now pass the mic on to Anushka, who's going to sing a song like she does on stage. No. I think Karan has said a lot, and we all are in agreement. As Ranbir was yet again directing Karan and saying, "Let's open the open the floor for questions." I would like to now call this press conference open. Anushka ji, this is Rajinder Singh from Makarana magazine. It's a Bollywood magazine. पहला सवाल तो आपसे मेरा अनुराग जी से था, वो मैं कर लूँगा बाद में. आपसे करता हूँ कि आपने NH10 की, पीके की, अब आप हैट्रिक में आपका क्या इरादा है? हैट्रिक में क्या इरादे तो बहुत अच्छे हैं, और ऐसे सारे आसार लग भी रहे हैं कि ये पिक्चर भी लोगों को खूब पसंद आएगी. लेकिन बाकी तो हमको देखना पड़ेगा 15 मई को रिलीज़ के बाद लोग क्या सोचते हैं. लेकिन हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत और प्यार से इस फिल्म को बनाया. हर एक इंसान ने, हम एक्टर्स ने, फिल्म मेकर जिन्होंने इस फिल्म को पुटअप किया है, जो इस स्टेज पे है, और जिन्होंने जो लोग ने इस फिल्म पे काम किया है. सो वी जस्ट होपिंग कि जिस प्यार से हमने इस फिल्म को बनाया है और जितना बिलीफ हमें था, वो लोगों को देखने को मिलेगा जब वो फिल्म देखेंगे. Thank you. Anurag, hi. Why is the film called Bombay Velvet? I know it is set in Bombay, but why the name Bombay Velvet? It's the name of the club, which is the most central to the film. The club is called Bombay Velvet. And one more question. You have Karan Johar in the film. You also have Ranbir Kapoor, who is very involved as an actor and as a person who knows films well. So was it difficult to control them in giving their inputs when it comes to the film? And because Karan is also a director, so in a good way he might have some inputs to better. I never saw Karan as a director on the set. He came on the set as an actor and he stayed as an actor. And Ranbir was the one who was a director only to Karan Johar. Sir, Anurag sir. And Anurag sir. Yeah, on the right side. Nice name, Bombay Velvet. But I feel only Karan sir is wearing the velvet suit. Why others are not wearing that? We are all wearing Bombay on मेरा our faces. अंडरवेयर वेलवेट का है. मेरा भी.
Karan, my question is for you. Yeah. Talking about Twitter, recently KRK posted a picture. I'm sure you must be aware about it. That you have. नहीं आपको मैं बोलूं KRK ने आज खुला मुझे दावा किया है कि अगर हमारी फिल्म चल गई तो अपना हथियार काट देंगे. हम लोग उनको एक आइस बॉक्स भेज रहे हैं, एक खास तौर से एक बहुत खास बना हुआ आइस बॉक्स भेज रहे हैं ताकि हम उनका जो हथियार है यहाँ पे जो म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा आ रहा है उसमें हम प्रिजर्व कर सके कि ये KRK जो इंडिया का सबसे इनकॉन्सिक्वेंशियल क्रिटिक है उसका हथियार है. उसको आई थिंक उसके लिए हम लोग अलग से टिकट भी लगाएंगे लोगों को देखने के लिए. तो ये आइस बॉक्स हम उनको भेज रहे हैं. रणवीर, Karan to react आपके on right. this because रणवीर, like the screenshot जॉनी of the- बलराज को जीने के लिए. Let me complete my question. Yeah. So I want Karan to react on this because the message was from you to him. Like that's what he has put a screenshot of. Can I ask you a question? Yeah. Do you believe I sent him that No, message? of course not. But then. I rest my case then. Hi. रणवीर आपके राइट है. जॉनी बलराज को जीने के लिए इस किस्म के रिसर्च आपने किए. क्या आपने अल पचिनो को भी देखा, डिकैप्रियो को भी देखा, या आप एक अपने विजन के साथ आए हैं जॉनी बलराज को लेकर? आई थिंक ज़्यादातर मैं हमेशा डायरेक्टर पे लटक के चलता हूँ. एंड इन दिस फिल्म लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो अनुराग ने बहुत सारा रिसर्च किया था. सब कुछ एज एन एक्टर आई थिंक व्हाट यू फाइंड इज इन द स्क्रिप्ट. और पहला जो हफ्ता होता है सेट पर यू डेवलप द कैरेक्टर देयर. बट हाँ मुश्किल था क्योंकि वो स्ट्रीट लिंगो था, अपन टपन था, एक बॉडी लैंग्वेज था. जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं वो तो आप एक दो दिन में जान जाते हो, लेकिन जो कैरेक्टर का जो एक इमोशनल डेप्थ होता है, एक वल्नरेबिलिटी होती है, आई थिंक वो आप सीन बाय सीन जब आप करते रहते हो तब कुछ ना कुछ निकल कर आता है. आई ऑनेस्टली फील कि वी हैड सच ग्रेट एक्टर्स, यू नो, मनीष सर, अनुष्का, करण, के सर, सत्तू, विवान, पूविया हु इज़ नॉट हियर टुडे ऑफ कोर्स. तो आई थिंक ये पूरा जो माहौल जो इन्होंने हमारे लिए क्रिएट किया था 50s बॉम्बे, जब हम आते थे सेट पर, ऑल ऑफ अस वी ऑल फेल्ट कनेक्टेड टू आवर कैरेक्टर्स. वी ऑल फेल्ट कि यार यहाँ कुछ इंस्पायरिंग चीज़ हो रही है, लेट्स ऑल रियली इमर्स आवरसेल्व्स, लेट्स डू समथिंग गुड, यू नो. तो वी ऑल जस्ट स्टक टू आवर विजन. एंड आज टुडे यू नो व्हेन वी लुक बैक एंड वी टॉक अबाउट बॉम्बे वेलवेट, अगर चले या ना चले दैट्स नॉट इन आवर हैंड्स, बट वी ओनली हैव गुड थिंग्स टू से अबाउट इट बिकॉज वी हैड सो मच ऑफ फन डूइंग द फिल्म, परफॉर्मिंग द फिल्म, ऑफ सेट जो हम मस्ती करते थे. एंड आई थिंक इफ़ यू हैव अ गुड टाइम ऑन सेट, अगर माहौल पॉजिटिविटी का होता है, वो कहीं ना कहीं फ्रेम पे भी स्क्रीन पर आ जाता है. And I think that is what I really take away from this film is like it was a lot of fun. You know, Ranbir. Last two questions, please. Hi, Ranbir- I have a question. Hi. Ranbir and Anushka, I have a question for both of you here. You know, mostly if you see, period films do not work at the box office. So when you were offered the film as an actor, were you apprehensive about signing the film ever? Not at all. Das was Actually- such a big success. Period Lagan. films are actually. लगान was such a big Gaddar. गदर Barfi was Mostly they रुक जा, हम don't. फिर और पीरियड फिल्म्स देते हैं. इतनी बनती नहीं है वो, बाकी वो पीरियड फिल्म नहीं होती हैं. मुगले आजम. मास्करेडिंग एज Black films पीरियड don't फिल्म. मुगले work. आजम से ज़्यादा Doesn't पीरियड फिल्म matter. क्या हो सकती है? Hi, I have a question for the cast. Before Bombay Velvet hits the big screen on 15th of May, important decision in Salman Khan hit and run case will be out. That's on 6th of May. I just wanted to know how does the industry look at it? Are friends anxious about the decision? Karan, Anushka, Ranbir? You know, I think a matter like that is legal. So for us to give our perspective is not entirely the right thing, and this is certainly not the platform like this. All of us, we're a fraternity. I've never said we're not an industry. So all of us are deeply connected to Salman, and we stand by him, we support him, and we wish him all the best. All our thoughts are always with him. But to give a comment on the situation is not something that I think any of us should do, and especially not on this platform. But where it comes to love and support, we have that in abundance for Salman. विकास जी, Hi, Ranbir. विकास जी, Please, 1 second. अभी हमने ट्रेलर में 2-3 चेहरे नेगेटिव्स देखे हैं, रणबीर जी का और करण जी का. तो मेन खतरनाक चेहरा आपके बाजू में बैठे हैं के साहब. इनके रोल के बारे में कुछ बताइए हमें. के एक्चुअली इस फिल्म में पॉजिटिव है. नहीं, ग्रेट एक्टर हैं वो, जबरदस्त विलेन हैं. हाँ, वो अपने जबरदस्त trailer में सबसे दिखाया पहले जबरदस्त. इन्होंने आपको विकास कहा. वो खामोश बैठे हैं, उनके बारे में बताइए. आप विकास हो. अनुराग सर, सिर्फ प्लीज मैं कॉल्ड ही यू बताऊंगा. विकास. मैं विकास हूँ. वो ठीक है, वो क्वीन के बाद से सब मुझे विकास ही ये बोलते अनुराग हैं. ये अनुराग वो, का विकास हो रहा है. सर जब बर्फी हिट होती है मुझे लोग बासु बुलाते हैं. जब रावण आती है लोग मुझे अनुभव सिन्हा बुलाते हैं. जब दबंग आती है लोग मुझे अभिनव बुलाते हैं. और क्वीन के बाद विकास बुलाते हैं. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं सिर्फ हिट फिल्म में बनाता हूँ. एनीवे, तो सबसे पॉजिटिव कैरेक्टर इनका फिल्म में
and is actually based on the first crime branch officer जो कुलकर्णी साहब थे उनके ऊपर इनका कैरेक्टर बेस्ड है और जो इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े केस सॉल्व किए थे तो उसके बारे में के साहब खुद कहेंगे सब कुछ तो कह दिया इसने यार बहुत मज़ा आया फिल्म करते हुए इसके अलावा कोई फ़लसफ़ा नहीं है मेरे पास दिस वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग इन दिस फिल्म एक तो एटमॉस्फेयर ऐसा था कि वाकई में 60s में चले गए थे हम लोग और हैट पहनना बड़ा मज़ा आता है यार बहुत वो कभी लाइफ में पहना नहीं था फिल्म में बाकी एक्टिंग होती रही बस Hi Ranbir. Anushka, Ranbir, hi. you're This question is for you. When it comes to playing a character from the 60s, you have a lot of examples in your family to follow. So, did you go through any old films or footage of your family? And has any member from your family seen the trailer, the songs, and what kind of feedback did you get from them? बहुत सारे सवाल है, but to be honest, of course, I've seen all the films of my family members, and we all have, and we somewhere all are an offshoot of that kind of cinema. We are what we are because of those films. But नहीं, this film में ऐसा कोई references वहाँ के नहीं थे. It's probably the look, and we see from pictures and stuff like that, like I mentioned earlier. But I think Anurag Kashyap is the biggest reference for everything concerned with Bombay Velvet. Whatever we say, whatever we do, he is the true hero of Bombay Velvet, and there can't be a bigger reference than him. That'll be. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you, everybody.
Okay, okay, guys, can we have some silence? Okay, we are thrilled to be here as a team and make this announcement that Bombay Velvet will release worldwide on the 28th of November this year. So that deserves a big, big... Please kept 28. The film will release. We have finished shooting it last night. एक दिन का shoot हमारा Calcutta का है, and I don't know what to say. I've got a tough task now, and I hope that everybody is happy when they see the film. 28th November. 28th November. ये सिर्फ लव स्टोरी है और बाकी किस तरह की फिल्म है वो पता चलेगा मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा फर्स्ट लुक कब रिलीज करना है फर्स्ट लुक कब रिलीज करना अक्टूबर इतनी देर तो आज इतनी जल्दी पार्टी क्यों रखी Will be surprised. It was, I don't know what to say. It was great. I think to be directed by Anurag and to have सबसे ज़्यादा मेरा काम रणबीर के साथ था. So officially he is my favorite co-star and my favorite director is Anurag Kashyap. I don't have any other choice actually to say that. And Phantom is my favorite producer and Fox is my favorite studio. आपका बॉलीवुड संदर्भ को करण डांटते थे तो अनुराग ने डांटा कि नहीं करण को एक्टिंग करने? मेरा रोल आई होप नहीं काटे. मुझे पता नहीं क्या डांटा नहीं मुझे अनुराग ने कभी नहीं डांटा और होपफुली मेरा रोल नहीं काटा. अगर कट जाए तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ये मेरा शायद लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा बॉम्बे वेलवेट का. अनुष्का आज मिसिंग है कहाँ पे वो दिखाई दे रही है क्या वो आईपीएल में बिजी तो नहीं क्रिकेट चल रहा है ना देख लो. सर शूटिंग कर रही है जोधपुर में शूटिंग कर रही है. भाई आपने अभी सुना हमने डेट 28 नवंबर है. देख लो गला फाड़ के हमने 28 नवंबर को रिलीज है. इसको बियर पिला आपको ड्रिंक चाहिए बाहर है आपने अपनी नाराजगी जताई थी राजधानी. हाँ बिल्कुल. वो सॉर्ट आउट कर लिया अब भाई सब सीनियर लोग खड़े राजू रानी से कौन कितनी देर तक नाराज रहते? राजू रानी साहब कितनी देर नाराज रहते हैं? अच्छा लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन सबसे पहले ये पूछना था कि आपको इतना टाइम क्यों लगा पार्टी में आने को? 2 घंटे लेट हुआ. रास्ता नहीं मिल रहा. कल रात को शूटिंग खत्म की है सो के उठा हूँ 9 बजे. थैंक यू सो मच. सुबह लास्ट 2 क्वेश्चन. अरे बहुत अच्छा हमारी फिल्म को 2 मिला हमारे कैमरामैन को मिला. आई थिंक अनुराग ने बहुत मेहनत और लगन से फिल्म बनाई. ये अनुराग का सपना रहा है फॉर 9 years एंड आई थिंक ये बहुत फेयर होगा टू हिम कि वाइडर ऑडियंस कम्स एंड सीज द फिल्म क्योंकि उन्होंने बहुत ही एंटरटेनिंग और एंगेजिंग फिल्म बनाई है. सो आई थिंक इट्स द करेक्ट रिलीज डेट. हमें ज़्यादा थिएटर्स भी मिलेंगे. वी डोंट वांट टू क्लैश विद अनदर फिल्म. सबका बिजनेस अफेक्ट होता है ज़्यादा हमारे होता. सो आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग दैट वी डन एंड होपफुली ऑडियंस विल गिव इट अ चांस. Thank you. I am acting in Shuddhi. Going to be a thundering round of applause. Lots of applause. They want some more lights? Okay, can we have some more lights, please? Face lights. Okay. A little bit more, the photographers. Ladies and gentlemen, on stage right now, we have the 2 fantastic stars. 2 fantastic stars on stage right now. I want a big, thunderous round of applause and lots of noise from the audience as I call upon Ranbir Kapoor and Anushka Sharma on stage. Give them a big round of applause.
Hi, welcome, and it's an honor and a pleasure, sir, to have you on the dais. Exciting times, the movie is right around the corner, and just to, we'll have the pictures. Okay, please take your seats, and I have some, we'll get them back again for some more pictures. I have a bouquet coming in for all of you from some excited kids. So I'd like to call upon, first of all, Trishala and Agastya on stage, please, young ones, to give it away to Nitish sir. Come on stage, let's give them a big round of applause. So sweethearts here, dressed in black, welcome beta. And we'll, okay, you can just be there. Oh, how sweet. A lot of the girls were like, can I be also on stage? Okay. And we'd also like to call upon, thank you sir, thank you Bachapari, thank you. They look excited, they don't want to go. We'll call you back again in some time if you can. And Ranbir, we actually had one more for you coming in from Khushi. Where's Khushi? She's supposed to be on stage and the kids just gave it away. Give them a, we're all here from Nazara Technologies. And I'd like to call upon the chairman and managing director, Mr. Vikas Mitrasen on stage, please. Can I have a big round of applause, please? Yes? Thank you. Yep. Okay, exciting times. We're here for the launch of the mobile game. And how does it feel? Just right on the corner, the movie is releasing, now the game is hitting the platform. And after this, we'll request both of you to unveil the trailer, please, for us. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for being here. We're here to launch the Bombay Velvet game by Nazara. Really exciting because I've never had a game of any film that I've done. I don't think they were game friendly. So I'm also excited to launch this game. I just played the game a couple of hours ago. It's quite simple. It's quite cool. So looking forward to it. How about you, Anushka? Have you ever had a game on you? Yeah, I have actually. Thanks for asking. In PK. Yeah, so it was good fun. We've seen the game actually, it's a lot of fun. I think a lot of detailing has gone into the game. The character actually does look like Ranbir, so that's great. Yeah, I hope you all enjoy it. But PK में तो आमिर सर थे ना, तू नहीं था गेम में. मेरा भी था character. तू था? इसमें नहीं लेकिन उसमें था. So let's unveil the trailer and then we'll open questions. The question and answer for the media house. Can I ask? रणबीर, मेरा सवाल आपसे है, 60s का दौर था, उस समय शम्मी कपूर साहब, राज कपूर साहब, उनका स्टारडम काफ़ी ज़्यादा था, उस समय ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था, इस समय बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, जैसे हम देख सकते हैं गेम लॉन्च हुआ है, और इस दौर में आप कपूर फैमिली में को आप रिप्रेजेंट करते हो, तो हाउ डज इट फील और कितना स्पेशल है आपके लिए इस मौजूदा दौर में आपका स्टारडम सबसे ज़्यादा है कपूर फैमिली में, तो हाउ डज इट फील फॉर यू? Thank you so much. बहुत अच्छा महसूस होता है कि I can be a part of this family. Thank you. That I can be a part of this family and represent it and take this legacy forward. लेकिन जब आप गेम का सवाल कर रहे थे, हाँ आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो फिल्म के साथ आप ये सब चीज़ें लॉन्च कर सकते हैं. बट काफ़ी कूल होता अगर शम्मी कपूर के दौर पर एक डांसिंग गेम होता उन पर, या राज कपूर के दौर पर एक मैं आवारा हूँ टाइप एक वैगाबाउंड सड़क पे चल रहा है, तो वो भी गेम काफ़ी कमाल का होता. So yeah, I mean, I feel lucky कि at least 50 साल बाद जब मैं शायद नहीं रहूँगा इस दुनिया में, तो शायद मेरे जो आगे परिवार है वो शायद मुझे लेकर एक कैरेक्टर लेकर एक गेम खेल सकते. तो थैंक यू नज़ारा फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. रणबीर, आपसे एक और सवाल है. फैंटास्टिक ट्रेलर और बहुत ही अच्छा गेम भी है. आप यहाँ ताजलैंड तक प्रमोट करने आए हैं, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सलमान खान से भी मिलने जाएंगे? देखिए सर, आई एम नॉट हियर टू चैलेंज द लॉ और क्या हो रहा है, मुझे पता है आप क्या पूछने वाले हो. बट ऑन अ पर्सनल लेवल यू नो वी हैव ऑल नोन मिस्टर सलमान खान. आई हैव नोन हिम फॉर मेनी इयर्स. और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आई डोंट थिंक देयर इज अ ह्यूमन बीइंग विद अ बिगर हार्ट, विद समवन जो बहुत कुछ करते समाज के लिए थ्रू हिज फाउंडेशन बीइंग ह्यूमन एंड ऑल्सो ऑन अ पर्सनल फ्रंट. So I think we all should be inspired by that. We should carry his that legacy forward on our own personal basis, do stuff like that.
बट जहाँ लॉ का सवाल है और जो कुछ हो रहा है इस केस को लेकर, आई रियली डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट. और क्या रणबीर आप मिलने जाएंगे सलमान से अगर हो सके? नहीं जी, ऐसा कुछ प्लान नहीं है, बट आई विश हिम एंड हिज फैमिली ऑल द स्ट्रेंथ एंड विशेस टू ओवरकम दीज हार्ड टाइम्स दैट दे गोइंग थ्रू. रणबीर, अनुष्का, आप दोनों से सवाल है. आलोक हियर फ्रॉम आज द बेटन. नहीं खड़ा होगा तो ये आ जाएगा ना. सवाल ये है कि आप अपने मोबाइल में कौन सा गेम खेलते हैं, क्योंकि पिछले दिनों खबर भी आई थी कि आप शायद कैंडी क्रश के काफी दीवाने हैं. अनुष्का, आपके मोबाइल के गेम के बारे में भी जानना चाहते हैं. एक्चुअली मैं काफ़ी थोड़ा सेल्फ इन्वॉल्व थी एक समय पे, तो मैं अपना खुद का पीके का गेम खेलती थी, जहाँ पे मैं खुद भाग रही होती थी, मैं खुद चीज़ें कलेक्ट कर रही होती थी. तो एक्चुअली इन इट्स अ बिग किक फॉर एन एक्टर कि आपको अपने खुद के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं गेम में, जैसे इस गेम में भी है. रणबीर का कैरेक्टर है. देव टोल्ड मी दैट दे डेवलपिंग माई कैरेक्टर लेटर ऑन. वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ऑब्वियसली. सो इट्स ग्रेट फन. आई प्ले पेट रेस्क्यू अ लॉट. एंड मैं काफ़ी हाई लेवल तक हम पे पहुंच गई थी. एंड ऑल्सो कैंडी क्रश ऑल्सो मैं काफ़ी ज़्यादा खेलती थी. सो या अच्छा टाइम पास है, बैठे हुए बोर हो रहे हो, एक आपने गेम निकाल के खेल लिया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, आपका फोकस बढ़ता है. मैं ज़्यादातर कैंडी क्रश खेलता हूँ, बट आई थिंक हम सबका ऑल टाइम फेवरेट रहा है स्नेक, जो नोकिया फोन में होता था. वो ऐसा गेम था जहाँ आई थिंक हम सबका इतना टाइम बर्बाद किया उस गेम में, बट ऑल्सो हमें इतनी खुशी भी दी है उस गेम ने. So that has been my all-time favorite game is Snake. Hello, this is Anushka Sharma. You're Raj. Yeah. I'd like to ask you that, what do you feel is a USP as a performer? Sorry, I didn't hear you. What do you feel is your USP? My USP? Yeah. It's very difficult for me to say what my USP is, but I think I approach my work with a clear, it's my own beliefs that I take into my work. It's my own decisions. I don't depend on or I don't rely on what is happening, what works. I go with my complete conviction and my belief, and I have the strength to take it forward. But it's difficult, obviously, for me to say exactly what my USP is. It's for people to kind of decide. And it's good if I don't know too much about myself. And I think it's always better for an actor to work in a certain amount of ambiguity of yourself and obliviousness of your own self. And I'd like to maintain that. Anushka, right here at the back, we've got Ranbir's comment on the Salman's verdict. Everybody has been speaking about it. A reaction from you would also be appreciated. I think what Ranbir said actually is exactly what I feel also. We cannot challenge anything that has been decided by an establishment, which is a judiciary. But yes, my feelings are with the Khan family and Salman, and I wish that they have a lot of strength at this very trying time. And I wish them from my heart, all the strength that they need to overcome this period. Ranbir? Hi. While in the film, Anushka plays a love interest, whereas in the trailer, towards the end, you are heard saying that Rosie ko main marunga. So what is the twist in the film? मैडम वही तो ट्विस्ट है, अगर बोल दूं तो आप शायद फिल्म ही देखोगे. बट हाँ, हमारे बीच में जॉनी और रोजी के जो किरदार है, हमारे बीच में खूनकार प्यार है. वो ऐसी केमिस्ट्री हम दिखा रहे हैं इस फिल्म के जरिए कि वो इतना प्यार करते, इतने पागलपन से प्यार करते कि खुद को मारते हैं, गाली देते हैं और 2 मिनट में चेंज कर प्यार भी करते हैं. सो इट्स अ वेरी रियल वल्नरेबल वॉलेटाइल रिलेशनशिप. लेकिन जो ट्रेलर में बोलता हूँ कि रोजी को कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसको अपन मारेगा, बस अपन, आई थिंक वो कहानी का हुक भी है, क्योंकि ये रोजी को मार भी डालता है और फिर उसके बाद क्या होता है इज द सेकंड हाफ ऑफ द फिल्म. Ranbir, Anushka. Hi, I'm Simran Singh from Bollywood, Nazar. Congratulations for the game launch. The trailer looks very awesome. Ranbir, my question to you is that this movie is set in 1960s. So while shooting in this movie, have you ever felt that you revisited that time? And my second question is, how did you prepare for your role? Have you ever taken reference from your grandfather or great grandfather? पाजी, टू बी ऑनेस्ट ऐसे कोई रेफरेंसेस तो नहीं लिए, एक्टिंग रेफरेंसेस. हाँ, जो लुक की बात है तो हम ज़्यादातर रेफरेंसेस फोटोग्राफ्स और जो भी छप चुका है ज़िंदगी में हम उनसे ही लेते. तो शायद मैंने रेफरेंसेस राज कपूर, अलिया राज कपूर, किशोर कुमार, उनसे लिए थे. जहाँ सेट का सवाल है और 1960s जब हम दोनों श्रीलंका पहुँचे और हमने देखा कि अनुराग और उसकी पूरी टीम ने एक पूरा सा बम्बई शहर क्रिएट किया था सेट पर. आई थिंक इट वॉज 9 acres ऑफ लैंड एंड रोड्स बने थे, बिल्डिंग्स बनी थी, मरीन ड्राइव बना था,
बॉम्बे वेलवेट वो जैज क्लब बन चुका था, ट्रैम्स जा रहे थे रोड पे, विंटेज कार्स थे, जूनियर आर्टिस्ट वो 60s जैसे बन के अपने काम के लिए जा रहे थे। तो एक माहौल ऐसा था कि बहुत ही बिलीवेबल था हमारे लिए। तो हमारा जो काम था बहुत आसान हो चुका था कि जैसे हम पहुंचे, मुझे ऐसा लगा यार आई डोंट डिजर्व दिस, मैं तो अभी शुरुआत की और इतनी बड़ी फिल्म, इतनी बड़ी दुनिया मेरे लिए क्रिएट हो रही है। तो आई फेल्ट वेरी ब्लेस्ड, आई फेल्ट वेरी ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल, एंड आई थिंक उससे आपका काम भी आसान हो जाता है। और ऐसे नहीं कि हम पीरियड फिल्म करें तो हमें पीरियड एक्टिंग करने की ज़रूरत होती है। जिस तरह से हम अभी हंसते उस ज़माने भी वैसे ही हंसते होंगे, जिस तरह से हम अभी रोते उस ज़माने भी वैसे ही रोते होंगे। तो आई थिंक जो पीरियड का जो माहौल है, वो जो टेक्निकल टीम है, उन्होंने हमारे लिए क्रिएट कर दिया था। रणबीर और अनुष्का दोनों से सवाल है, मदर्स डे आ रहा है, तो मदर्स डे पे आप लोग अपनी मदर को कहाँ लेके जाने वाले? सर मेरा यही मानना है कि मदर्स डे ऐसा कोई दिन नहीं होता, हर दिन मदर्स डे होता है। हम जो भी हैं हम मम्मी की बदौलत से, जो भी हमें सीख मिली है, वैल्यूज़ मिले, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आई, स्पेशली मी, आई हैव बीन सो क्लोज टू माय मदर। तो मुझे आपके कैमरा के जरिए तो उनको विश करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उस दिन जाऊँगा, उनके साथ टाइम बिताऊँगा। बट आई थिंक ये जो मदर्स डे है ये एक फैड बन चुका है, जो फूल वालों ने ऐसा एक दिन बनाया कि शायद आप उनसे फूल खरीदे और दो। बट आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट मदर्स डे एवरी डे ऑफ आवर लाइफ, दैट्स समथिंग वी शुड डू। Yeah, you can't take family for granted. You can't take your loved ones for granted. So each day is family day, each day is Mother's Day, each day is Father's Day, Brother's Day, whatever day. So that is how you should celebrate. I would like to say that. I mean, also, we feel like you don't. I mean, actually, I have really nothing to say. मैं sentence शुरू कर देती हूँ और फिर मेरे को पता नहीं तो मैं क्या बोल रही हूँ. तो I've said what I had to say. Hi, Ranbir. If given a chance, which of your past movies Hi, Vaishali Chandra. If given a chance, which of your past movies would you like to see in a game version, since it's a gaming event? I'd probably like to see that towel song from Savaria. Right. I think the concept of the game is that you cannot drop the towel. आप पूरा गाना नाच के दिखाओ लेकिन towel नहीं गिरना चाहिए. I think that'll be an interesting game. Thank you. Hi, Ranbir. In the movie Bombay Velvet, you have a lot of intimate scenes with Anushka. We normally play games, we do rate our partners, our friends. So how would you rate Anushka, and Anushka, how would you rate Ranbir in that matter? In the intimate scenes? In the kissing, देखिए मेरा अगेन ये एक मानना है कि जो एक्टर्स किसिंग सीन करते या एक्शन सीन करते या गाने करते उसमें कोई अंतर नहीं होता। हमारे लिए एक्टिंग है, 100 लोग हमें देख रहे हैं, कैमरा हमें देख रहा है, तो ऐसे नहीं है कि आप उसका लुत्फ उठा रहे हो या उसका फ़ायदा उठा रहे हो। हम एक्टिंग कर रहे हैं। जब हम मर रहे होते ऐसा नहीं है कि हम एक्चुअली मर रहे हैं, तो ये एक्टिंग है। एंड थैंकफुली अनुष्का और मेरी दोस्ती फिल्म से पहले ही हुई थी, तो बहुत ही कंफर्ट था हमारे बीच में। ये एक्टर तो बहुत कमाल है, हम सब जानते हैं, बट आई थिंक जिस तरह की ये एक्टर है उसके अंदर कोई बैगेज नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, बहुत खुला से काम करती है और यही चाहती है कि फिल्म अच्छा हो, सीन अच्छा हो। आई थिंक जब एक ऐसा इंटेंशन होता है, आपके सामने जो एक्टर होता है उस तरीके से अगर वो अप्रोच करते हैं अपने रोल को, आपके लिए भी बहुत आसान से हो जाता है। बट आई थिंक अनुष्का कहना चाहेगी कि मेरे इंटीमेट सीन्स कैसे हैं। I don't kiss and tell. अनुष्का जी, दिस इज राजेंद्र सिंह फ्रॉम मकराना मैगजीन। आपने NH10 आपने सब आओ क्यों बोला? अच्छा Why? बाजी आप फेमस क्यों? पहले वो बोलो। अनुष्का जी आपने NH10 थैंक यू जी। नहीं अपने थैंक यू तो ठीक है, लेकिन आप फेमस हो क्यों? वही बता सकते हैं, आपके फैंस बताएंगे बाद में हमें। ओके, आपने NH10 में बहुत जबरदस्त काम किया, अलग हट के, पीके में भी ऐसा किया। इस फिल्म से आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? किस किस्म का रोल आप देना कि अच्छा काम किया, रोशनी दीजिए, हाँ कुछ रोशनी डालिए इस रोल के ऊपर। देखिए मेरे लिए एक्चुअली ये जो किरदार है ये मेरी पर्सनालिटी से बहुत अलग है, बहुत ही ज्यादा अलग है। सोच सिमिलर नहीं है, दुनिया को देखने का नजरिया, लोगों के साथ रिलेशनशिप्स, इंस्टिंक्ट्स एकदम कंप्लीटली डिफरेंट है मेरी खुद की पर्सनालिटी से। तो मैं कभी भी अपने खुद के जो पर्सनल इमोशनल रिजर्वॉयर्स होती थी उनमें उस पर मैं डाइव नहीं कर सकती थी इस फिल्म के लिए। तो मुझे एक अलग सोच लेके आनी पड़ी, जो इनफैक्ट एक एक्टर का काम है। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि मुझे चैलेंज मिला और ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं लोगों को अपनी एक अलग रेंज दिखा सकती हूँ एज एन एक्टर। एंड आई एम होपिंग दैट लोगों को 15 मई के बाद वही लगे। 15 मई को फिल्म रिलीज हो रही है। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट, सो यू कैन आस्क फैंटम और समबडी अबाउट इट। My question is for Nitish. Hi, here. Hi. I'm Mansi. How does it feel to make games for Ranbir and Anushka?
Oh, it feels fantastic. I think, we've had this great partnership with Fox Studios, and it's allowing us to plan and make games well in advance, rather than 1 month or 2 months before the movie. And, with such talented actors, it gives us that much more enthusiasm and energy to, make great games. Just to let you know a little bit of an insight, Nitish's mentor is Shami Kapoor From the age of 16, he's been under the tutelage of Shami Kapoor so it must be unique for him too. Yeah, that was a great experience. It's a great experience. And with this, we come to an end to today's question and answer, and we'll get you guys up for a photo for our photographers. And if time permits. Last question, please. पूछ लीजिए. Hello, I'm Roshni from ABP. Apart from this game launch, I want to ask you that कि हाल ही में अभिजीत भट्टाचार्य ने एक ट्वीट किया है कि सड़क पे सोने वाले कुत्ते की मौत मरेंगे, तो ये आपके हिसाब से कितना सही है? मुझे भी एक्चुअली इसके बारे में नहीं पता है, तो we'll have to read up about it before we make a comment on a platform like this. And we're done. Any more questions? Okay. Thank you. We'll have you guys up.
दोनों जन से यहाँ पे की करके पूछना चाहेंगे फिल्म कैसी लगी आपको? आई थिंक अमेजिंग, इनफैक्ट बहुत ही अच्छा एरा क्रिएट किया है अनुराग कश्यप ने। मैं शुरू से बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। रणबीर इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स इन द कंट्री। अनुष्का ने बहुत अच्छा किया। इनफैक्ट नीति मोहन का बहुत अच्छा दोस्त हूँ एंड शी इज डन अ ब्रिलियंट जॉब विद सिंगिंग, और वो आवाज़ जो सूट की अनुष्का पे, इट्स वेरी इनक्रेडिबल आई थिंक। राज भाई, I had a great time watching Bombay Velvet यार। आई थिंक रिलीज़ हो रही है फ्राइडे को, आप सभी जाइए देख के आइए। अनुराग कश्यप हमारी इंडस्ट्री के मतलब बेस्ट डायरेक्टर्स हैं और उनके साथ मतलब बेस्ट एक्टर काम कर रहे हैं। तो आई थिंक जैसा आयुष्मान ने कहा, जो एरा क्रिएट किया है, जैसे हम देखते हैं बॉम्बे को डेवलप होते हुए, तो हमने नहीं देखा है, और तो दिस वी कैन सी दैट एंड एवरीबॉडी इज़ वेरी गुड। ओके, इस मूवी के बारे में कहा जा रहा है कि विराट कोहली एक स्पेशल अपीयरेंस दे रहे हैं इस मूवी में, क्या सच? विल बी क्वाइट। फ्राइडे इज व्हेन द फिल्म इज रिलीजिंग, सो गो एंड वॉच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।